All right, now day 2 of the Delhi Chalo protest. Undeterred, protesting farmers resumed their march towards Delhi today following a stormy day marked by tear gas shells, water cannons, clashes with the police at the Punjab-Haryana border. Farmers remain resolute, affirming that they will continue the peaceful march for their rights. Farmer leader Sarwan Singh Pandher once again took aim at the BJP government, accusing them of attacking farmers for raising their legitimate demand of minimum support price. In fact, hundreds of tractor trolleys there were seen lined up at Shambhu border along the Punjab-Haryana border area. Shambhu border was the most volatile region, continued their Delhi Chalo march despite the police backlash. In fact, the national capital and its borders now fortified completely for this protest with concrete slabs, iron nails, barbed wires all in place to impede their advance. Meanwhile, to maintain law and order, the Delhi police have imposed Section 144 in the region. Also, internet has been snapped in 7 districts of Haryana for another 48 hours. देखिए, मैं किसान संगठनों को यही कहूँगा कि किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि किसान और किसान परिवारों की चिंता लगातार सरकार की है और करेगी। किसान संगठनों को इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम लगातार इस बात को ध्यान में रखें कि असामान्य स्थिति पैदा करके किसी का समाधान नहीं हो सकता। पहली बार होगा भी देश के किसानां मजदूरां ते अर्ध सैनिक फोर्स अटैक कर रही ने, इन्ना जबर ढाया जा रहा। आह SLR दे खोल आ जिहड़े चले हुए आ, जिहड़े साडे ते वरतों की गई आ, तो मतलब पूरी तरह मोदी सरकार ताकत दी वरतों कर रही आ। असीं अज भी कहने आ भी साडा अंदोलन पीसफुली आ पर अमन आ। असीं समझदे आ भी जे साडा अंदोलन पर अमन ते पीसफुल रहा ते सानू जितनों कोई भी हरा नहीं सकदा हैगा। असीं जितांगे ते साडा नौजवान सियाणा वा समझदार आ। केंद्र सानू पहलों बदनाम कर लई तैयार हैगी आ और वो साडी नेगेटिव घटना एक अद्धी नू चढ़ा के वध तो वध पेश करूगी। जड़ा कुछ वो कर रहे आ उन्हों डिरेल किया जाऊगा। All right, here's day 2 of the Delhi Chalo protest, where we see Amit Bharadwaj, who's right there at the Singhu border, one of those areas where farmers are protesting just by the border areas on day 2 as well. Amit, give us the visuals. What do we see right behind you? Are farmers adamant that they will be seated there until a minimum support price law is not implemented? Nabila, if you could come again. Take us through the images right behind you. Amit, how many of them do you see farmers who are settled there, and how long do they want to be seated in protest? Right, Nabila, you know, I'm standing at Singhu border. The preparations are quite massive out here in anticipation that if at all the farmers break the barricades at Shambhu border, it is the very border where these Sanyukt Kisan Morcha had staged a 13-month-long protest against the 3 controversial farm laws. And so if they break the Shambhu border, they'll be heading towards Panipat, Sonipat and eventually to Singhu border. And that is why all preparations has been done out here. The huge concrete walls, they have been cemented as well. Traffic on both sides of the national highway has been completely choked, so it is off bounds. Other route that the farmers are taking is that of the Sirsa Khanori route, which will lead them to Narwana and eventually Tikri border. But we are given to understand that in Haryana's Jean district's Khanori, there have been fresh clashes between the police and the farmers are unrelenting. They want to move forward and further towards the national capital. And remember, this is this select few organizations from Punjab who have a strong presence in Majha belt. They are the ones who are leading the protest this time around. It is Sanyukt Kisan Morcha, apolitical, as well as Kisan Mazdoor Morcha Manch, which has been formed for this agitation. And however, the BKU Dwaba, which has a stronghold in the Dwaba belt of Punjab, they have also extended their support and joined the agitation right now. You heard also
also Sarwan Singh Pandey, who's leading the agitation along with Jagjit Singh Dhaliwal. They are saying that the brute force is being used against the farmers who are trying to protest and reach towards the national capital. On the other side, the union ministers such as Mr. Arjun Munda have said that the government is ready to speak, to hold talks over the issue to resolve the crisis, and there is no need to take extraordinary steps because that would lead to a lot of a problem and trouble for the commuters and common public. So that's the stance of the government as well. But you have the opposition parties right now training guns at the government, at the central government, accusing them of ignoring the demands of the farmers. But we'll also show you the visuals from Singhu border once more, right, Nabila, for our viewers' perspective, as to how things have changed in the past 24 hours. The fortification has increased at Singhu border. So has the concrete walls. The rapid action force is constantly on standby, and the containers which are put on the flyover on the national highway at Singhu border, on them we can also now see sandbags kept on them, meaning that the fortification has been further strengthened. Nabila. All right, Amit, stay with us. We also have Arvind Oja and Shreya Chatterjee bringing us these ground reports from border points aligning the national capital Delhi. Let's have a look. समझ में आता है कि जो बड़ी संख्या में किसान है वो अब यहाँ पर जमा हो गए। ये जो फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर जब खत्म होता है तो सामने की तरफ शंभू बॉर्डर, यानी शंभू बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो हरियाणा पड़ जाता है। लेकिन तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं जिससे ये अंदाजा लगाया सकता है तो धीरे धीरे जो किसानों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है और बीच बीच में लंगर आ रहा है। इन सब के बीच जो हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस है, उसके अलावा जो अर्धसैनिक बल के जवान है, वो किसी भी कीमत पर किसानों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। इन सब के बीच किसानों की क्या तैयारी है, जरा हम ये तैयारी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, ये इस तरह का ट्रैक्टर है, ये बाकायदा ट्रॉली है और इस ट्रॉली में पीछे की तरफ पूरा सामान रखा हुआ है। जरा ये देखिए आप, इसमें बाकायदा ये गैस है, गैस के अलावा ये पूरा ड्रम है, ये बर्तन है। बर्तन आप देखकर, ये जो तमाम सामान है इसको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तैयारी पूरी है। और एक किसान से हमने बात की, 6 महीने से 1 साल का पूरा राशन है, इसमें राशन पानी सब है ना। तो देखिए इसमें पूरा राशन पानी है, यानी किसानों की पूरी तैयारी। और इस तैयारी के साथ ये जो प्रोटेस्टर हैं वो निकले हुए हैं, दिल्ली कूच करना चाहते हैं। हालांकि हरियाणा पुलिस बीच में अड़ी हुई है कि वो किसी भी कीमत पर हरियाणा बॉर्डर के अंदर एंट्री नहीं होने देंगे और अगर किसी तरह से हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो दिल्ली पुलिस मुस्तैद है हर बॉर्डर पर। वो अड़ी हुई है कि किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। इन सबके बीच ये तस्वीर दिखाती है कि धीरे धीरे करके किसान बढ़ रहे हैं और मामला अब इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा है। जाहिर सी बात है क्योंकि किसानों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अरविंद ओझा, सिंघू बॉर्डर। As the day is proceeding, you can see farmers here at the Shambhu border gathering in large numbers.